Everyone, welcome back to our English speaking course day 14. Today we are learn making requests politely in English. Many people know English words but they don't know how to ask for something politely. In today's lesson, you will learn how to make polite requests using can, could and would. So let's begin today's session. What is a polite request? A request means asking someone to do something. Look at these two sentences. Give me your pen. Or could you give me your pen, please? Which one sound better? Of course, the second sound more polite and professionally. Whenever you ask for help, information or a favor, use polite language only. यूजिंग कैन लेट्स स्टार्ट विथ कैन स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं कैन प्लस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो एग्जांपल में देखते हैं कैन यू हेल्प मी कैन आई यूज योर फोन कैन यू ओपन द डोर आपको क्या करना है इसको रिपीट करना है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं इसका मीनिंग ये हुआ नाउ लेट्स लर्न कुड इज मोर पोलाइट देन कैन स्ट्रक्चर में could subject and verb could you help me could you repeat that could I sit here तो बच्चों आपको क्या करना है इसको रिपीट करना है तो could sound more polite than can using word में now let's learn would is very polite and professionally would you please help me would you mind waiting for a moment would you please explain it again repeat that all words would you would that so great job would is commonly used in ऑफिस एंड फॉर्मल सिचुएशन तो बच्चों ये वुड का आप यूज स्कूल एंड कॉलेज एंड ऑफिस में कर सकते हो अब ऑफिस कन्वर्जेशन में हम देख लेते हैं लेट्स स्टार्ट ऑफिस रियल लाइफ ऑफिस कन्वर्जेशन कुड यू हेल्प मी विथ दिस रिपोर्ट श्योर आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प थैंक यू यू आर वेलकम तो ये एक्सीलेंट वर्ड्स है बच्चों आपको याद रखना है ऑफिस रियल लाइफ कन्वर्जेशन में अब यूजफुल कॉमन पोलाइट एक्सप्रेशन देख लेते हैं तो हियर आर सम यूजफुल एक्सप्रेशन यू शुड यूज एवरी डे एक्सक्यूज मी प्लीज थैंक यू यू आर वेलकम मे आई आस्क समथिंग could you repeat that would you please explain it again practice this expression regularly would you please explain it again बच्चों ये बहुत अच्छा लगता है यूज का वर्ड सुनने के लिए could you help me can I ask a question would you please wait could you send the email can you guide me तो बच्चों इसका आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करना है अब स्पीकिंग चैलेंज में हम देखते हैं आंसर दिस क्वेश्चन कैन यू हेल्प योर फ्रेंड्स तो आपको ये आंसर देना है यस आई कैन हेल्प माय फ्रेंड्स कुड यू टीच समवन इंग्लिश यस आई कुड टीच बेसिक इंग्लिश would you like to improve your communication skill yes I would like to improve my communication skill speak loudly and confidently vocabulary में हम देखते हैं request means अनुरोध help means मदद प्लीज मतलब कृपया एक्सप्लेन मतलब समझना रिपीट मतलब दोहराना गाइड मतलब मार्गदर्शन क्वेश्चन मतलब प्रश्न कन्वर्जेशन मतलब बातचीत Now let's do a 1-minute speaking challenges. Asking for help politely. You can say, hello sir, could you help me with this project? I am facing someone difficulties. Would you please guide me? Thank you for your support. Try to speak for 1 minute without stopping. Remember, confidence comes from practice. So, today's success formula polite English better communicate तो speak slowly use polite words practice every day
confidence will grow automatically. So always use please, thank you, could you, would you. तो होमवर्क में आपको क्या बोलना है? टूडेज होमवर्क वेरी सिंपल. राइट 10 पोलाइट रिक्वेस्ट सेंटेंस यूजिंग कैन, कुड, वुड. एग्जाम्पल में कैन यू हेल्प मी, कुड यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक, would you please send me the document. Write your answer in the comment section. Thank you for joining me in English speaking course day 14. Keep practicing every day. Speak English confidently and we'll see you in day 15 with another exciting lesson. Thank you and have a wonderful day. Bye everyone.